आवाज पूरी जाएगी। मेरी आवाज पार्टिसिपेंट कहाँ है? और अपने यहाँ की भी है, लोकल लोकल स्टार्ट हो गई आवाज स्टार्ट है। मेडिकल कॉलेज की भी है, मेडिकल कॉलेज की शायद। Participants, can you hear the voice? Yes, Yes, sir. sir. It's audible. Yes, sir. Yes, Audible. sir. Yes, sir. And the slide also. Yes, sir. Okay. Please mute Yes, yourself. sir. Now kindly mute yourself. Good So, morning, sir. I hope I am audible to all. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. A very good morning to Good fellow morning, teachers. sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Thank you so much. Now, today we'll be just having a discussion on a very old saying that prevention Good morning, sir. is better than cure. Uh, Good we morning, all sir. know that, we have all heard about it, and during the course of discussion, when we will come to the end, I hope I, with you people, will be able to justify that yes, prevention is better than cure. अरे सारी निकाल दिया एनर्जी भाई। Kindly mute yourself. Kindly mute yourself. Participants, please mute yourself. It is distracting us. Okay. Now, where did this saying come from? Prevention is better than cure. There have been lots of things which are similar to that. Soap and water cost less than doctors, fees, and medicines. Where there is dirt, there is danger. Now, this concept of taking action early, what of disaster later, isn't new. And somewhere between mid-13th century, who is making this noise? Please tell that person to mute himself or herself. Please tell this person. अच्छा मैम प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। They are grown-ups. Okay. So in the mid-13th century, there was a Latin saying, it is better and more useful to meet a problem in time than to seek a remedy after the damage is done. And this saying was a precursor to the snappier version coined by a Dutch philosopher, Desiderius Erasmus, somewhere around 1500 AD. Prevention is better than cure. Now, there are two types of people in the world. Those who get their car regularly serviced, and those who hear a funny noise in the engine and keep on driving until they need a roadside assistant. So, we are two type of people. So, as car, we also do it for our health. Many of us delay seeing a doctor until we are feeling unwell. But instead of trying to get better once we are sick, it's always better to do what we can to avoid getting sick in the first place. Why? Because prevention is always better than cure. Now, what does prevention mean? It's really very disturbing. It's very disturbing. Kindly mute yourself now. If you are not interested, why have you joined the course? Everybody is, there are 200 people. If you can't mute yourself, don't listen to me, mute me also. But don't create this noise. Now, what does prevention means? Prevention means
preventing something from occurrence. And there is again an old saying by Benjamin Franklin, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Now, what is basically prevention? Now, please remember, there are three types of basically prevention. A primary prevention, secondary prevention, as well as tertiary prevention. Now, what does primary prevention mean? Primary prevention is an intervention implemented before there is evidence of disease or injury. The intent here is to reduce or eliminate the causative risk factors. For example, we encourage exercise and healthy eating to prevent individuals from becoming overweight. This is one example. So what is primary prevention? We have not become overweight, but we don't want to become overweight. We are doing exercise and doing healthy eating. Got my point? So primary prevention is that we don't do certain things so that we don't develop a particular disease. Another example. In our childhood, we got vaccines against many diseases. So what does it do? It prevented us from getting those diseases. So vaccination is an example of primary prevention in most cases. So if we have a diphtheria, pertussis, tetanus vaccine, or as a matter of fact, most of us had COVID vaccine. This vaccine means that we want to prevent this disease from happening. So this is primary prevention. Now, what is secondary prevention? Secondary prevention is an intervention implemented after disease has begun, but before it is too much symptomatic. Now, here, what we want to do is early identification and treatment. We want to make a diagnosis early so that we can treat the disease instantly. Like what can be the example? We keep on checking our body mass index so that we can identify individuals who are overweight or obese. Now, what does overweight or obese mean? What does BMI mean? BMI is weight in kilogram divided by our height in meter, that is meter square. So, for example, if somebody's weight is 60 kilogram and his or her height is 1.5 meter, we will divide 60 by 1.5 and again by 1.5. And normal BMI, according to WHO, is somewhere between 18 to 25. So we can all calculate our BMI. Above that, there is range. First, an individual becomes overweight or it is a lower risk, and then it becomes obese. And if it is around 40, this BMI, a person can be morbidly obese. So by checking body mass, कुछ नहीं करना इसके अंदर, nothing. We have to just know our height. Height हमारी बढ़ती घटती नहीं है. It is only the weight, and accordingly we can do it. There is also a very simple formula by which we can know our ideal body weight, and that is called as Broca's index. What is that? Whatever
whatever our height is, we minus 100 from it. So whatever will be the result, that will be our ideal body weight. For example, if somebody's height is 160 centimeter, we minus 100 from it, and the ideal body weight would be 60. Okay, so this is just an example, but ideally we are going for a BMI, that is weight in kilogram divided by height in meter, that is meter square. Okay, so now we know what is primary prevention and what is secondary prevention. The third level of prevention is tertiary prevention. Now, what is tertiary prevention? Tertiary prevention is after the disease or some injury has been established. And here, our intent is to stop bad things from getting worse. Okay, so example, we want that these obese individuals, those individuals who have body mass of more than BMI of more than 25, lose weight to prevent progression to more severe consequences. Like, for example, somebody has developed cataract. Cataract matlab motiyabind in eye, है ना? Now, this cataract has been operated so that this person doesn't develop blindness. So this is a tertiary prevention. This is a tertiary prevention. So now I hope we know what are the levels of prevention. Can anybody from us tell us which could be the best form of prevention? Primary Primary, prevention. Primary prevention is better, sir. Ideally. But remember, every form of prevention is important. Every form of prevention is important. So now we know what are the levels of prevention. Now, what exactly are we doing it? And we will come up with some good examples for that. So in primary prevention, we talk about health promotion. Health promotion means good lifestyle, good physical activity, good sanitation, education. These are examples of health promotion. And what is specific protection in primary prevention? Vaccination is the specific protection. Giving in anemia, we don't want, if you know many things, I give you an example. In a pregnant lady, from the second trimester, मतलब जो 3 महीने की प्रेगनेंसी के ऊपर जब हो जाता है, we give iron and folic acid to the pregnant lady to prevent iron. So this is iron deficiency. So this is specific protection. अपने बच्चों को हम 9 महीने से 5 साल तक के हर 6 महीने पे we are giving vitamin A dose every 6 months. Total 9 doses. This is to prevent vitamin A deficiency. This is again an example of specific protection. So primary prevention is health promotion and specific protection. Secondary prevention is early diagnosis and prompt treatment. Early diagnosis. Like, for example, again I give you the example of our children. When we visit pediatricians, doctor के पास हम लेके जाते हैं, तो doctor measures the weight and height of the child. What is he doing? He is measuring the growth of the child.
So this is an example of early diagnosis. If there is growth faltering, we can easily detect and then we can give advice. In tertiary prevention, we have disability limitation and rehabilitation. I gave you the example of cataract surgery. What we do, we don't want this person to go blind. So we took out the lens, put some artificial lens. This is disability limitation. Okay, so these are the levels of prevention and the interventions which we do. Now, this is a universal truth that prevention is better than cure. Not long ago, somewhere in the 18th century, the salesmen, the sailors used to die because of bleeding from gums. And what happened? A doctor named as James Lind, he started giving vitamin C in the form of lemons and oranges to the sailors. And what happened? Since the sailors started eating it, they did not had any form of bleeding. And what happened? It was the vitamin C in the lemon which prevented that. And this is how today we know that scurvy can be prevented by having vitamin C. Because of this, the British naval force was also called as limeys. They used to carry lemon with them. So just a single observation, single thing led to lots of life being saved. Again, a very important example. There was an epidemic of cholera. We all know cholera. Anybody who can tell me what is cholera? सर कॉलरा डिजीज है जिसमें वो वोमिटिंग और लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है डिहाइड्रेशन बिल्कुल सही कहा. एक बैक्टीरियल डिजीज है. It is a bacterial disease caused by Vibrio cholerae, and this can lead to death because of, as you rightly pointed out, madam, because of dehydration. There is इसको normally common में हम हैजा कहते हैं, हैजा. Okay, and this was creating havoc in Soho district in London. What happened? An epidemiologist named as John Snow surveyed deaths reported in the homes, mostly near the pump and which was used for drinking water. He made a map. The people using water from different sources. He documented that people drinking water from a specified hand pump was the source of death. They didn't know about cholera at that time. So what he did, जो normally आज से 30-40 साल पहले बड़े लोग किया करते थे, शैतानी में या उसने हैंडल निकाल दिया उस पंप का. And because of that, this cholera ceased. It stopped because nobody was drinking water from that. So what he did was he prevented the consumption of contaminated water. And now we know that cholera is something which is related to poor sanitation. At that time, people were not knowing.
the only disease which till date has been uprooted from this world is smallpox. So what did he do? There was a scientist named as Edward Jenner. I hope many of us know about it. What did he do? He saw that it was his observation that the people who were in animal husbandry or who are in contact with buffaloes and cows, they developed some lesions in the hand, but they did not develop the dreaded disease called as smallpox. Now, this was his observation. What did he do? He took the fluid from the hands of these milkmen and inoculated into another person. And then, after some time, the fluid from a smallpox patient, the fluid from the lesion, and he inoculated into the same person on whom he had inoculated the fluid from the milkman. And to his utter surprise, this person did not develop smallpox. This is how the world came up with the vaccine, which was smallpox vaccine. He is known as father of immunology. And today, the world is free of smallpox. Why? Because of vaccination. Because of vaccination. What is this? What is this? It is poliomyelitis. Again, today, India, for the last almost more than 10 years, is free from a handicapping disease called as poliomyelitis. How? Because of polio vaccine. Because of polio vaccine. So now we are knowing that what are the things because of which prevention has been good. Can everybody enumerate so that we know that people are listening? Anybody? Because of vaccines? Yes. Anybody who knows about other vaccines which are not childhood vaccines? ये तो पोलियो का है. Adult vaccines. Anybody? Because now we are adults. Elephant disease? For corona. Yes, sir. Corona vaccine. Very good. Thank you, sir. हेपेटाइटिस वैक्सीन भी आता है ना? Hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine. Very good. बी, हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. Any vaccine nowadays? HPV vaccine, HPV? Vaccine for females. Yes, for cervical cancer. Human papilloma vaccine. Please remember, this vaccine prevents cancer. 2 vaccines prevent cancers. 2 vaccines. One directly, one indirectly. And both of the vaccines have been told by our learned participants. One is hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine prevents hepatitis B disease. And this hepatitis B disease in later life can lead to cancer of liver. That's why we are giving hepatitis B vaccine. This is for both males and females. Whereas human
papilloma virus vaccine, HPV vaccine, is exclusively for females to prevent carcinoma of cervix. Okay, so this is a very good example of vaccines preventing what? Cancers. Okay, so I hope it is clear. Now, since we are talking about prevention, please remember there are two types of diseases. One, communicable diseases, and the other, non-communicable diseases. Okay, just I will rush through it and then come to the main point. But we should know this, how the diseases are transmitted. Diseases are transmitted from infected person to healthy person. Remember, man is an enemy of another man. So what happens? By direct contact, handshake, kissing, by air, through sneezing, coughing, indirect contact, you are touching, an infected person is touching something, the uninfected person touches the same thing and he gets into contact. By food, water, blood, the things can be transmitted from infected person to healthy person. The bite of some insects like mosquito, it can lead to transmission of a disease from infected person to healthy person. So we have direct contact, air, indirect contact, we have food, insect, and other things. So this is how diseases are transmitted. So common diseases, cholera, food and water; typhoid, again food and water; jaundice, again food and water; tuberculosis and influenza by air; malaria by mosquito; and tetanus by wound exposed to dust or rusted item. So these are the common diseases and how they are spread. Now I will take a minute to talk about prevention of mosquito diseases. Diseases transmitted through mosquitoes. Now, please remember, can anybody tell me what are the diseases transmitted through mosquitoes? Anybody? Malaria. Malaria. Malaria, dengue. Dengue, sir. डेंगू, चिकनगुनिया. Dengue, malaria, chikungunya. Dengue, malaria. Dengue, malaria. So we know about it. We know lots about this. Now, how to prevent diseases through mosquito prevention? First of all, we should remember there are few things which have to be done. I have put it into 5 Ds. Okay, some point may not be as good for malaria, but if you do it, there is no harm. But for dengue, yes. Okay. First D is dump. What is dump? By periodically dumping standing water so that you can prevent mosquitoes from growing into adults that feed on us. We all know that mosquitoes thrive on stagnant water. Can anybody tell me what are the places where we can have standing water? So water cooler. Particular. Yes. Water cooler. Yeah, water cooler. Stuck water, sir. Huh? Ruka हुआ पानी, sir. Stagnant water. What can be the places where you can have standing water or standing? छत पर पानी जो ठहर जाता है सर, उससे भी हो जाता है, काफी दिनों तक ठहर जाता है. बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया. और
ये जो वो air टूटे फूटे बर्तन में भी पानी रुक जाता है, उससे भी हो जाता है। गमले में एक्स्ट्रा पानी हो, उससे हो जाता है। मैडम, हम लोग आरओ यूज करते हैं, जी। वहां उसका पानी जो निकल के अगर कहीं पे रुक जाए उससे भी होता है। जो एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं, उसका डक्ट से जो पानी गिरता है उसको भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ग्रोइंग इफ वी डोंट अलाउ दिस वाटर टू स्टैग्नेट। वन पॉइंट, ड्रेन रेगुलरली ड्रेन स्टैंडिंग वाटर सोर्सेस। जैसे अभी मैडम ने बताया कि अगर हम वाटरिंग ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं तो ओवर ना करें। If you are putting some pet water dishes, it should not be left for many days. Okay? So we have to regularly, जो सर ने बताया कि हमारी छतों पे पानी, the stand water can stagnate on our roofs, that also should not be allowed. So there are 2 D's now, dump and drain. Third is equally important, dressing for outdoor activities by wearing long pants and long sleeves, especially when we are in the rainy seasons and in summers. So because this will prevent us from the bites of the mosquito. Use DEET. DEET is an insect repellent. So DEET is proven to be the most effective mosquito repellent. And when is the best time to be indoor or properly dressed is dusk and dawn, because especially the dengue mosquito bites us at dusk and dawn. And I hope everybody will be with me when I say that this is the time when we are most of the time ill clad or scantily clad. हम उस टाइम भाई सुबह सुबह ज्यादातर लोग अपने हाफ पैंट्स में या हाफ शर्ट्स में होते हैं, और सिमिलरली शाम में जब हम अपने कॉलेज से आते हैं तो भी हम रिलैक्स होने के लिए ऐसे ही होते हैं, whether it is male or females, we all know that. And this is the apt time when this mosquito bites us. So these are the 5 D's. Okay. Then the other thing is about the hand washing. I hope everybody knows the importance of hand washing. कोई है हम में से जो बता सकता है हैंड वॉशिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? एनीबॉडी? सर, हैंड वॉश से बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए अधिकांश खाने से पहले, हमें भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से या हैंड वॉश से धो लेना चाहिए, जो भी उपलब्ध हो, ताकि उससे हमारे शरीर में बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं वो अंदर ना जा पाए। थैंक यू मैडम। एनीबॉडी एल्स? तो मैडम ने कहा खाना खाने से पहले हमको हाथ धो लेना चाहिए। सर, बाहर से आने के बाद भी हाथ धोने चाहिए सर कहीं से? ओके, वेरी Sir, to make hands free from physical, chemical and microbiological contamination. ओके, थैंक यू सो मच। हाथ धोने से इन्फेक्टेड डिजीज को फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक चीज में ऐड कर दूं, आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट, सिर्फ हाथ खाना खाने से पहले नहीं धोना है, खाना बनाने से भी पहले धोना है, खाना सर्व करने से पहले भी धोना है, और आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। और जैसे किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि व्हेनेवर वी कम फ्रॉम आउटसाइड वी कैन वॉश आवर hands, especially for women who have very young kids. When they are going for breastfeeding their child,
they should wash their hands. And when they clean the child, this young child, also they should wash their hands. Studies have proven that merely washing our hands leads to 30% reduction in cases of diarrhea. 30%. Just हाथ धो लेने से आप डायरिया से मुक्ति पा लेंगे। क्या आप लोगों को स्लाइड दिख रही है हमारी? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you Yes, see? sir. Can you जी, sir. see the organisms which are written on the hand slide? Hepatitis A. क्या लिखा हुआ है hepatitis A में? I can cause jaundice and diarrhea. Staphylococcus, है ना? Staphylococcus हमारे throat infection करती है. Pseudomonas can infect wounds. Streptococcus, sore throat. Shigella, I can cause diarrhea. Hemophilus, again, it can lead to septicemia. ये सारे के सारे हमारे हाथ में हैं. All these bacteria and viruses are there on our hand. अब ये हमारे स्टेप्स हैं. हम तो देख नहीं सकते कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार rub hands palm to palm, right arm over the left dorsum with interlaced fingers. मैं कर रहा हूं आपके लिए, आप अगर देख सकते हैं उनको तो आप करिए. फिर palm to palm with fingers interlaced. फिर हमने किया palms with finger interlock और thumb को हमने किया. फिर rotational rubbing backwards and forward with clasped fingers of right hand, left palms and vice versa. तो टोटल कितना समय लगा? तकरीबन every step 30 seconds. and for at least 5 seconds. For at least 5 seconds. So it will be around 30 seconds. अगर आधे मिनट तक के हमने ठीक से इस तरह से याद रहे, अगर we have some अंगूठी or something of like, it should be also clean. Okay. So by this we can prevent so many diseases. So many diseases. So कौन सी diseases? Respiratory diseases like pneumonia, cold and influenza, all these things can be prevented. Okay. Any questions? कैसे हैंग कर गया? तो सर हर बार हैंड वॉश या साबुन से ही हाथ धोना है क्या? बेहतर होता है लेकिन जरूरी नहीं है सर. सर इस खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद, वॉशरूम के जाने के बाद आप इसको कर सकते हैं. ठीक है. आपने बोला साबुन यूज कर रहे हैं तो उससे भी तो स्किन को नुकसान पहुंच सकता है सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. इसलिए बार बार के लिए मैं नहीं कह रहा हूं सर. जी. वॉशरूम के बाद खास तौर पे और खाना खाने से पहले. ठीक है सर. ओके सर. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. Sir, can we use sanitizer instead of washing hands? जो अभी सर ने कहा था ना, उससे भी बहुत सी चीजों का आंसर. देखिए, पानी अगर नहीं मिल रहा है, आप एक रेगिस्तान में रह रहे हैं या कहीं पे क्या कहते हैं आप ट्रेवल कर रहे हैं जहां पे पानी की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल यूज करें. लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, जो सर ने कहा था, क्या कहा था अभी सर ने, कि वो केमिकल भी हमारे हाथ को प्रॉब्लम कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो ज्यादा केमिकल्स यूज करने से हमारे जो नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हाथ में, वो भी चले जाते हैं. हर चीज लिमिट में, हर चीज. आप ये भी बता सकते हैं सर कि किस तरह का साबुन यूज करना चाहिए या हैंड वॉश, डेटॉल? कोई भी प्रॉब्लम.
कोई जी। भी साफ सर, कोई भी। ठीक है सर। जी जी। इससे पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक चीज जो मैं इस स्लाइड को जरूर दिखलाता हूं, आई नो अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन ये जो मेरी लास्ट ऑफलाइन इंटरेक्शन हुआ था एकेडमिक स्टाफ में 2020 के फरवरी में समवेयर, तो हम लोगों ने एक तब वो ये नया आया था कोरोना, तो हम लोगों ने एक बात की थी और कैसे कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म था। याद रहे, वुहान में पहला केस हुआ था, द फर्स्ट केस वाज इन वुहान, चाइना, एंड वी हैड मेड अ thing to remember by Wuhan only. W was for wash hands, U for use mask properly, have temperature checked regularly, avoid large crowds, and never touch your face with unclean hands. तब तक वैक्सीन नहीं आई थी। ओके, अभी भी ये चीज हमारे लिए वैल्यूबल है। ओके, सो इट वाज जस्ट to have a do it. Okay, now we will not do this again because now the things have gone. Now we are not talking about corona. We are not talking about corona now. So we will skip this. But still remember this. What is this? Can anybody tell me? What is So this? a person has sneezed and is immediately going to shake hands with somebody, but the doctor who's aware of this Don't practice, shake like, hands. yeah. So yeah, don't shake hands basically before. तो बात की एक बात, दूर से राम राम, no washing, no handshake. It's better to follow the Indian culture of doing ram ram from a distance. And it doesn't mean that you are avoiding it. It's better to avoid it. अब यहाँ पे थोड़ा सा समय हम लोग देंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। This was all about communicable disease. And remember, we are talking about prevention is better than cure. So non-communicable disease are not infectious. They are also called as chronic disease. They are also called as chronic disease. And 65 million deaths occur because of that. And mainly cardiovascular diseases, cancers, diabetes, and chronic lung disease. So what are the non-communicable disease? Four main: cardiovascular, cancer, chronic respiratory disease, and diabetes. It won't be an exaggeration to say that India is the diabetic capital. We have more diabetics in India than any part of the world. So we should be concerned about this. They are also called as common lifestyle diseases. What are the four top lifestyle diseases in India? Cardiovascular diseases, diabetes mellitus, lung diseases, that is pulmonary diseases, and cancer. So they are the common lifestyle diseases. Others can be depression, anxiety, stress, chronic kidney diseases, and peptic ulcers and asthma. They are the common lifestyle diseases. Why lifestyle? Because they are directly or indirectly related to our lifestyle. I hope everybody is able to see this slide. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can sir. anybody- Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can it? Yes, sir. What it do for me? Just one person read for me, so that. Yes, who will read? So may I? Yes, please.
Yeah, so risk factors for non-communicable diseases, high blood pressure, physical inactivity, obesity, raised cholesterol, decreased vegetable and fruit intake, raised blood glucose, alcohol, tobacco use. Thank you so much. Now, of this, are they not our lifestyle problems? Except for, if I say, except for rates, like, what can you say? Everything is directly or indirectly related to our lifestyle. What can be the cause of high blood pressure? Our diet rich in salt. Sir, PPT is not visible. Pardon, sir? PPT is not visible. अभी तो मैडम सर ने पढ़ा था, मैडम ने पढ़ा था. Sir, सर नहीं it दिखाई is दे रही है सर, visible. पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है सर. दिखाई नहीं दे रहा है. आपको शायद सर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने तो मैडम से पढ़वाया था, वो हमारे साथ थोड़ी बैठी हुई है. मैडम के पढ़ने के बाद ही हट गया सर वहां से ना. हट गया सर, हट गया. No, no, it is visible. नहीं, It is it's visible. still पूनम visible. वाजपेयी मैम ने कुछ शेयर Sir, it किया is है not तो उसके visible, बाद sir. से नहीं दिख रहा है सर. मैडम पूनम वाजपेयी मैम was sharing something और उसके बाद से कुछ नहीं दिख रहा है सर. No, but it is, I mean, to me, it is still visible. मैडम Must ये be, थोड़ी May शेयर be किया है. possible मैम. must be a network issue or something. आपके नेटवर्क See, इशू, it's changed. ठीक है. चलिए. So these are the, now how can we prevent these, all these? By dietary changes, by physical activity, and cessation of use of tobacco and alcohol. अब पहली बात करते हैं डाइट की. अब एक चीज जो यहाँ पे हम बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होने जा रही है, ये हमारे और आपको इसको प्रैक्टिस करना है. A healthy diet helps to protect against all forms of non-diseases like diabetes, heart disease, stroke, and cancer. Unhealthy diet and lack of physical activity are global risk for health. Unhealthy diet and this. And unhealthy diet, now what is a healthy diet? ये हम सब के लिए है. Whether it is Sir, sir, could you please present the slides once again? It's not visible. for everybody now. Yes, sir. I think more or less Yes, everybody sir. is Not visible, sir. more or less Sir, not visible, sir. Yes, sir. Okay, I have Not visible, sir. okay. Not visible. No problem, no problem. Just listen to me. I'm just there is no picture in it. Just listen to me. I have called the person who will help me out. Okay, so we should not waste. Okay, sir. Okay, sir. A healthy diet includes the following. What is that? Fruit, vegetables, legumes, nuts, and whole grains. Now, this is what we should have it. Whole grains means unprocessed maize, millet, oats, wheat, and brown rice. Legumes means lentils and beans. Now, this is what we have to eat. How much? At least 400 grams of fruit and vegetables per day. How much? कितनी मात्रा में? At least 400 grams. 400 grams. 400 grams of fruits and vegetables. Excluding potatoes, sweet potatoes, and other starchy roots. ये जो हम आलू खाते हैं इसको नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर. अब आराम से बताइए, सोच के बताइए कि क्या बहुत ज्यादा हमने बता दिया है 400 ग्राम पर डे?
पहले तो ये सोचिए कि क्या हम खा रहे हैं इतना। ये उन लोगों को स्क्रीन दिख नहीं रहा है, शेयर नहीं हो। अच्छा तो मैं बताता हूँ। एनीबडी 4, अब अपना कोई भी हम में से कोई बताए कि वो कितना फ्रूट और वेजिटेबल पर डे लेता है अंदाज से। एनीबडी? सर फ्रूट तो 400 ग्राम नहीं हो पाता है, मतलब पर डे तो नहीं हो पाता है, लेकिन वेजिटेबल्स तो हो जाते हैं, पर आलू इंक्लूड करके। हाँ, समझ में आ रही बात? सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक के साथ है? जी सर, सबके साथ कोई प्रॉब्लम जी सर, सबके साथ है। अब दूसरी चीज सुनिए, ये तो क्वांटिटी हो गई हमने। अच्छा, हम यहां भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मीट मत खाइए, हम ये कह रहे हैं वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है ना? कितना? 400 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। एक बनाना कितने ग्राम का टोटल हो जाता होगा तकरीबन? लगभग 100 ग्राम। 100 ग्राम होगा सर, 50 ग्राम तो 50 ग्राम। चलिए, शायद स्क्रीन उन लोगों को दिख नहीं रही है, अब वहां से मैसेज आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमको स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अगर थोड़ा सा, हाँ, किसी ने क्या, ओहो, किसी ने प्रेजेंट कर दिया बीच में। तो वो क्या अलाउड? अच्छा, वो मैंने, सर पूनम वाजपेयी मैम ने। अरे तो थैंक यू पूनम मैडम। तो उन्होंने कैसे प्रेजेंट कर दिया? वो बीच में प्रेजेंटेशन हमने किया था। हम तो खड़े होकर पढ़ाने लग रहा है। अब दिख रहा है? यस यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, अब दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर, स्पष्ट। यस सर, यस सर दिखाई दिया। स्क्रीन बड़ी कर दी। प्लीज म्यूट करें, म्यूट। चलिए, ये हम इससे कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरे पास है, नहीं चेंज कर, इससे मैं कर रहा हूँ। ओके, नाउ स्लाइड इज विजिबल। नाउ द अदर थिंग इज दैट less than 10% of the total energy intake from sugars. For example, if we are consuming around 2000 calories per day, this calories 10%, that is not more than 200, should not be from the free sugars. No, from the free sugars. Okay? अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्री शुगर्स कौन सी होती है? All sugars added to foods or drinks by the manufacturers or consumer, including naturally present in honey, syrups, fruit juices and fruit juice concentrates. बस समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। कितनी भी आप ये बस सोचिएगा कि आप हनी अगर खा रहे हैं तो हनी बहुत ज्यादा ले लें, ऐसा नहीं है, ठीक है? इट हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट, लेकिन इतना भी बेनिफिट नहीं है कि आप वही लेते रहे सिर्फ। तो खास तौर पे जो हम लोग फ्रूट जूसेस पीते हैं, रियल का जूस जो पीते हैं वो होता है अनरियल है ना? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ये बताइए कि एक दिन में हम कितनी कप चाय पी लेते हैं? 5 से 6 कप लगभग। जो लोग होते हैं सर काफी पी लेते हैं, बाकी तो नॉर्मली तो सुबह शाम। इसमें भी 10 ग्राम्स ऑफ 2 कप चाय, 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम ऑफ शुगर ले लेंगे। तो फिर उसके बाद अगर आपके पास स्वीट टूथ है, अगर आप मीठा खाने के शौकीन है,
तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्री शुगर्स आर ऑल शुगर्स एडेड टू फूड्स और ड्रिंक्स बाय द मैन्युफैक्चरर, कुक और कंज्यूमर। तो पहली चीज 400 ग्राम ऑफ fruits and vegetables, less than 10% of the total energy from free sugars, approximately 50 gram for a person of healthy body weight. 50 gram कितना हुआ? तकरीबन 10 to 12 teaspoons of sugar. ये हमको लिमिट कर देना है। ओके, तीसरी चीज क्या है? लेस देन 30% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम फैट्स। अब फैट्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स normally they are found in fish, nuts, sunflower oil, soya bean and olive oils. They are to be preferred with saturated fats. Where found? Meat, butter, palm and coconut oil, cheese, ghee. These has to be preferred, not preferred because they are rich in saturated fats. Then there are two types of these saturated, can be trans fats and industrially produced trans fats. ये जितने भी baked and fried foods होते हैं, pre-packaged snacks होते हैं, ये सब trans fats होते हैं। Wafers, cookies, pies, बिस्किट्स, ये सारे के सारे में ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट होता है। ओके, हमको क्या करना है? टोटल एनर्जी जितनी भी हम ले रहे हैं 30% से ज्यादा फैट से नहीं होनी चाहिए, और अगर हम फैट भी ले रहे हैं तो अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट the intake of saturated fats be reduced to less than 10% of the total energy intake. तो अगर हम 2000 किलो कैलोरीज का फिर से एग्जांपल ले लें तो कितना आएगा डॉक्टर साहब? हाउ मच? 200 कैलोरीज। 200 कैलोरीज से ज्यादा जो है हमको किसी के फैट्स नहीं लेने हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और 1% फ्रॉम ट्रांस फैट, फ्रॉम ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का एग्जांपल हमने दिया, कोई रिपीट करेगा? कुकीज, बिस्किट्स, वेफर्स, फ्रोजन आइटम्स, they all contains trans fat. They all contains trans fat. Okay. Okay. So now, are you able to see or understand what foods are to be avoided? Yes, sir. So can anybody tell me? Can anybody tell me? Cookies, wafers, chips. I am not saying don't eat it. I am just saying limit the use of it. Are you getting my point? In सारी को आप लिमिट कर दीजिए। आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑल्सो। तीसरी चीज आया सॉल्ट इनटेक। यहां पे सिर्फ मैंने एग्जांपल पे टाटा सॉल्ट लिखा है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट सॉल्ट। द थिंग इज दैट the salt should be ionized and one should not use more than 5 grams of salt per day individually. कितना सर? 5 ग्राम। 5 ग्राम, क्योंकि हमको बाकी चीजों से भी सॉल्ट मिल रहा है। हर चीज में थोड़ी थोड़ी सॉल्ट होता है। या एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हम व्हीट खाते हैं या राइस खाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है।
तो हमको फैट वहां से भी मिल रहा है, और उसके अलावा ये कहलाता है इनविजिबल फैट। इनविजिबल फैट। और विजिबल फैट कौन सा हुआ? जो हमने ऑयल ऊपर से डाला सब्जी बनाने के लिए, या कोई रेसिपी बनाने के लिए, या ब्रेड में हमने मक्खन लगाया, दैट इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज विजिबल फैट। ठीक सर, आयोडाइज सॉल्टी होना चाहिए, इसके अंदर नमक आजकल यूज कर रहे हैं लोग। आयोडाइज सॉल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग, हम सबको जो है वो हम लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्यों? कोई बताएगा? Iodine deficiency disease is directly related to our environment. हमको सॉल्ट कहां से मिलता है? जो हम खाना खाते हैं, जो हम सब्जी लेते हैं, उसके अंदर जो आयोडीन होता है उससे मिलता है, या अगर हम मीट लेते हैं तो जो एनिमल्स ने के अंदर जो आयोडीन होता है उससे हमारे अंदर आता है। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, the top layer of the soil, which was supposed to be rich in iodine, gets depleted. So the water, the fauna and flora which was there is now deficient in iodine. इसलिए हमको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। ठीक, तो कोशिश ये कीजिए, देखिए टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपने नॉन आयोडाइज ले लिया, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आयोडाइज सॉल्ट ले। अब बहुत जल्दी प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, बहुत जल्दी, है ना? ईटिंग एटलीस्ट 400 ग्राम्स और 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब कैसे? हमने पहले आपको बताया, सिर्फ नॉलेज दी। अब एग्जांपल, ऑलवेज इंक्लूड वेजिटेबल्स इन मील्स। कैसे? अगर आप मीट भी खाते हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल्स इंक्लूड कर लें। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एज स्नैक्स। लेडीज, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? कौन कौन से आप ले सकते हैं? सर लाइक बीट रूट्स और खीरा ले सकते हैं सर, इवन रेडिश और कैरेट। स्नैक्स की बात कर रहे हैं मैडम। अच्छा, स्नैक्स की बात कर रहे हैं सर। सर एप्पल, नट्स ले सकते हैं सर हम लोग शायद उसमें। स्नैक्स में फ्रेश फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स, तो इनके कोई स्नैक बना दे। ईटिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट आर इन सीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। किसी एक फ्रूट और वेजिटेबल को नहीं, वैरायटी। सीधी सी बात है, वी ट्राई टू ईट फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स। तो ये 400 ग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या करना है? रिप्लेसिंग बोथ सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स विथ अनसैचुरेटेड फैट्स। कौन से? हमने आपको शुरू में बता दिया था कौन सा ऑयल ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनके ऊपर हम लोगों को जानना है। फैट intake can be reduced by how? Steaming or boiling instead of frying. Eating reduced fat dairy foods and lean meats. Limiting the consumption of baked and fried foods. I'm not saying don't eat it, but limit the consumption of baked and fried foods and pre-packaged foods, snacks and food. समझ में आ रही बात? जैसे डोनट्स, केक्स, पाइज, यार ये सारी चीजें टेस्टी होती हैं, बट वी हैव टू रिड्यूस इट। वी हैव टू रिड्यूस इट। सॉल्ट इनटेक कैन बी रिड्यूस्ड बाय डोंट ईट फूड्स विच आर रिच इन सॉल्ट, लाइक soya sauce, gravy, pickles, pizzas, but try to, and what you can do if you are having lots of salt someday, you can also take potassium rich diet. And remember, all green leafy vegetables and fruits have
good amount of potassium. Like amla, it is a good source of potassium. Guava, banana, they are good source of potassium. So they mitigate the negative effects of elevated blood pressure. Now what, अब हम बात करते हैं, देखिए फूड की बात हो गई, सॉल्ट की बात हो गई, तीसरी चीज थी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, है ना. हमारी धीमे धीमे फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, हमको पता है ना. नाउ व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी? I will not ask anybody to read because last time when I asked, the show was disrupted. अब आप देखिए, I hope everybody is able to see. Yes, sir. All physical activity, regular physical activity reduces risk of all causes of mortality by 30%. जितनी भी मौतें हो रही हैं उसको हम 30% डिक्रीज कर सकते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से. Cardiovascular diseases by 35%, diabetes by 40%, colon and breast cancer by 20%, depression by 30%, fracture of hip by 68% and गजनी बनने से बच सकते हैं by 30%. So these are the health benefits of physical activity. You name it and you have it. These are the, now what do you mean by good physical activity? Moderate intensity activity for at least 60 minutes per day. Adults के लिए, adults यहाँ पे कौन है? हम और आप, 18 से 60 साल के लोग. At least 30 minutes of exercise, most if not all days. Should include flexibility, muscle strength and endurance exercise twice a week. अगर किसी को weight loss करना है तब 60 to 90 minutes to improve when already in poor health. So this is what you have to do. This is what should be done. So adults 19 to 64 should aim for at least 150 minutes of moderate intensity in bouts of 10 minutes or more each week. एक हफ्ते में 150 मिनट. एक दिन में कितना आया? Anybody? एक दिन में कितना आया? 20 minutes. Not more than 20-25 minutes. 20. सिर्फ 150 मिनट हमको एक सप्ताह में यूज करना है. और अगर आपके पास 150 मिनट भी नहीं है तो विगरस एक्टिविटी फॉर 75 मिनट्स. अभी हम बताएंगे विगरस एक्टिविटी क्या हो. दूसरी चीज जो हमको करनी है वो ये करनी है कि हमको मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट सिडेंटरी, सिटिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. बहुत देर तक के बैठना नहीं है. All adults should undertake muscle strengthening activity. हम यहां से शुरू करते हैं राइट साइड से. कैरिंग हेवी शॉपिंग. सबको शॉपिंग पसंद है ना? तो खूब शॉपिंग कीजिए और लेकिन खुद उठा के लाइए. योगा और एक्सरसाइजिंग विथ वेट्स, मॉडरेट वेट्स, बहुत ज्यादा हैवी नहीं इस्तेमाल करना है. एटलीस्ट 2 days a week. Just 2 days a week. अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी और विगरस इंटेंसिटी किसे कहते हैं.
मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है? ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, हाउस वर्क एंड डोमेस्टिक कोर्स। ये हमारे जो है, या मॉडरेट लोड्स जो 20 किलो से कम होते हैं उनको कैरी करना, इसे कहते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग जो बोल रहे थे क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना, ऐसा चलना जब आपकी बात जब कर रहे हो तो दूसरा समझ जाए कि आप चल रहे हैं। ओके सर, है ना? ब्रिस्क ब्रिस्क वॉकिंग, है ना? ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है? ब्रिस्क वॉकिंग समझ में आ रही है? यस सर। एक मिनट देखिए आप, उसमें हम बहुत ब्रिस्कली जो है हम आगे निकल गए उस चक्कर में, है ना? तो फिर से वापस आते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है? हम ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, ओके, स्टेयर्स पे चढ़ना। अब आया विगरस इंटेंसिटी। ये वाली जो है ना, ये मॉडरेट इंटेंसिटी कितना करना है हमको? 150 मिनट एक हफ्ते में। सर पीपीटी नॉट विजिबल। अच्छा, और एग्जांपल्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी क्या है? रनिंग, क्या है? रनिंग, वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, फास्ट साइकिलिंग, एरोबिक्स, फास्ट स्विमिंग, ये सारे के सारे हमारे विगरस इंटेंसिटी है। अगर आप ये कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या सीढ़ियां चढ़ रही हैं, या फास्ट साइकिलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 75 मिनट 75 मिनट्स पर वीक कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बट if you are doing moderate intensity work like brisk walking, gardening, housework and domestic chores, all these things you have to do 150 minutes per day. How much? 150 minutes per day. So I hope by this we know that how we can reduce the non-communicable disease. Can anybody just summarize it for me? Anybody who can summarize it for me? हाँ, कोई बताएगा? कोई भी? जी सर, Yes, कोई sir. कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, डॉक्टर अर्चना प्लीज, थैंक यू। सर उसमें है कि आप हर किसी को 150 मिनट एक सप्ताह में ब्रिस्क वॉक मतलब तेज चलना है, ठीक है? अगर सीढ़ियां चढ़ने वाली या रनिंग करते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इससे हमारा हेल्थ सही रहेगा। 150 और मैडम और चीजें तो फिजिकल, 3 चीजें बताई थी ना मैडम। 1 is physical activity, number 2 cessation of tobacco and alcohol, और तीसरी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट सर, कोई और सिंह साहब? 400 ग्राम फल और सब्जियां खाना है सर। कितना कितना? 100 नहीं, 400 ग्राम का। 400 ग्राम था, 400 400 ग्राम। 400 ग्राम का। 400 ग्राम आएगा। साइकिलिंग, गार्डनिंग, ये सब भी करें सर। क्या चीज खास तौर पे? क्या चीज? फ्रूट्स, Fruits, vegetables. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल पे किसको काउंट नहीं करेंगे? पोटैटो। Can anybody, like we all, I think by your names, we all are in from the northern part of India. यूपी बिहार के ही लोग लग रहे हैं हमें नाम से। जी सर। आज की डेट में फरवरी के महीने में, can you tell me about fruits and vegetables which we can eat?
Oranges, fruit, apple, orange, orange, pineapple, Apple, is sir. also there. pomegranate. Just one person. Guavas, sir, guavas. And kindly, just one person. Yes, any male person. Seasonal fruits, sir. Huh? Seasonal सीजनल fruits. फ्रूट में सीजनल सर फ्रूट पपाया है So strawberry, जैसे orange, जैसे आजकल अंगूर और ऑरेंजेस का टाइम बहुत अच्छा है, तो अच्छा, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स में मटर, बंदा गोभी, फूल गोभी, मूली, शलगम, बीटरूट, ये सब आ रहे हैं सर अभी। गाजर मैम। Green vegetables. पालक मेथी सब वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम। एक आदमी की एक सज्जन 400 ग्राम्स। अगर हम आपसे कहें मैडम कि फर्ज कीजिए हमारा परिवार 4 लोगों का है, तो हम क्या बनाएंगे? जी अर्चना मैम। सर मिक्स्ड वेज बना देंगे और बगल में एक डिश साग का रख लेंगे, जो सरसों पालक का साग है वो भी बना देंगे, और एक मिक्स वेज बना देंगे, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा सर। हमको रोज ऐसा ही कुछ करना होगा कि हमारी डाइट में, अच्छा सिर्फ एक डाइट नहीं, पूरे दिन की है डॉक्टर साहब, इट इज फॉर द होल डे। यू कैन टेक, like it's not that it is for the one meal, it is for the whole day. Now remember 3 things more. One, the free sugar should not be more than 10% of the calories. तो हमें क्या नहीं लेना है, किस चीज का सेवन नहीं करना है? cold drinks and flavored drinks. कोल्ड ड्रिंक्स में तो मैडम, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने। अवॉइड Candies, एक्स्ट्रा शुगर, हाँ वो बेक्ड फूड और ये बिस्किट चिप्स वगैरह अवॉइड करना है। 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। जी संतोष जी, इसमें सर तौर पे दाल मोट का भी कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह रहे मत खाइए, प्लीज, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट डोंट ईट इट, आई एम जस्ट सेइंग लिमिट द यूज। अब हम फैट्स की बात कर लें। फैट्स में क्या अवॉइड करना है? डालडा, जो हमारे दूसरे टाइप के, जो हमारे सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट सर अवॉइड करना। ठीक है, प्लीज डोंट कॉल मी सर, वी आर ऑल सर्स, वी आर जस्ट, है ना, वी आर सर और somebody, you are not। जी सर आप भी तो कहते हैं सर हम। यस मयंक सर, आप बताइए डॉक्टर मयंक। Yes sir, sir. Sir, long chain saturated fatty acid types के प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं सर। जैसे हम तो एग्जांपल की बात करते हैं, कोई एग्जांपल सर जैसे मतलब ये डालडा घी हो गया, या फिर ये मार्गरीन वगैरह हो गया, ये फैट्स हो गए सर, हो गया ये चीजें। एक चीज रेड मीट अवॉइड करना है सर। रेड मीट अवॉइड। एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, ऑलवेज, यहाँ पे there are many senior people also here, just remember one single oil for cooking food is never better. It is always better to use oil depending upon the situation. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो ऑयल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसको डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। आपने पूरी करी, पूरी समझते हैं ना, पूरी? यस सर, यस सर, यस सर। वो डीप फ्राइंग करते हैं। होता क्या है, आपने मैदे की जगह व्हीट लिया, बहुत अच्छा, बट क्योंकि वो ऑयल जो है बार बार गर्म हो रहा है, फैटी एसिड बदल जाता है। इससे हमको के लिए फ्राइंग करनी है, वहां पे हमें
ऑयल यूज करना है। सर प्लीज सर म्यूट करवा दीजिए, आवाज आपकी क्लियर प्लीज नहीं आ माइक पाती। माइक म्यूट कर दीजिए सर। फिर बात नहीं हो पाती। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? सर प्लीज रिपीट सर। रिपीट कर दीजिए सर। मेरा ये कहना था कि वन सिंगल जो हम लोग यूज करते हैं ऑयल, इट शुड नॉट बी देयर। ऑयल फॉर कोर्स, जैसे डीप फ्राइंग के लिए वो ऑयल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि क्या होता है फिर वो मेल्ट करके ट्रांस फैटी एसिड में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना? तो होता क्या है ना, समोसा इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। जो ऑयल सुबह कई बार हीट और रीहीट करके समोसा फ्राई किया गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। So it can be same thing can be for puri and other things where we are using lots of oil for deep frying. Okay? जैसे आप ऑलिव ऑयल की भी अलग अलग प्रकार होते हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किसी को सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, किसी को सिर्फ फ्राई कर। तो फ्राई के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑयल्स हमको इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर रिपीटेड हीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और बिफोर वी एंड, एक कंसेप्ट हमने और बताया था आपको एक्टिविटी का, तो बताना चाहेगा what was the physical activity which I have told? सर मॉडरेट और विगरस बताए थे सर। मॉडरेट वीक में 150 मिनट्स एंड विगरस 75 मिनट्स। तो संतोष जी, अगर हमको हमें और आपको करनी है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 20 अगर मॉडरेट कर रहे हैं तो 20-25 मिनट 25-30 मिनट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज और वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो बताए थे सर आप। तो ये बताइए कि वॉकिंग मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है। यस सर। है ना? ना आपको कोई जिम ज्वाइन करना है, ना आपको कहीं विशेष चीज खरीदनी है ना? जी। नॉर्मल क्लोथ्स और एक नॉर्मल अच्छे फुटवेयर से आप वॉकिंग कर सकते हैं, और कोशिश ये रहे कि भीड़ के साथ वॉकिंग ना करें, फिर उसमें वॉकिंग कम और वॉकिंग ज्यादा होती है ना? यस सर। एक्सरसाइज में योगा भी इंक्लूड रहेगा सर क्या? योगा तो मैंने पहले कह दिया था आपसे, 3 चीजें अलग से दिखलाई नहीं। 1, 2, 3 मैंने शॉपिंग बैग से शुरू किया था, बीच में योगा था, और क्या कहते हैं उधर से वेट लिफ्टिंग थी लेस देन 20 किलोग्राम। अगर आपको स्लाइड हमारी याद हो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, योगा तो है ही है। योगा तो मेडिटेशन भी और योगा भी, दोनों चीजें। मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है इसके साथ। यस। देखिए, मेडिटेशन से मन शांत होता है, मेडिटेशन से मन शांत होता है ना? तो योगा भी, योगा क्या कर रहा है? आपको स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स करा रहा है। ठीक है ना मेरी बात? सर जी विशाल जी। सर, जो आपने बताया मिनिमम 150 मिनट्स बी ने बताया, इसका सर मैक्सिमम भी कोई लिमिट है सर? ऐसा कोई पैरामीटर है? हाँ सर, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, आप सही। देखिए, सीधी सी बात है, हर चीज जो है वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों, देखिए, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज होती है और एक्सरसाइज अलग चीज होती है ना? जी सर। जहां पे आपको तकलीफ होने लगी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं विशाल जी। जी। हम नॉर्मली 11,000 स्टेप्स रोज चलते हैं, 10,000 से 11,000। जी। नवंबर और दिसंबर में मौसम बहुत अच्छा था, हमारे स्टेप्स 15 to 16,000 हो गए पर डे। जी। हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, हमें बैकएक होने लगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मॉडरेट, हर चीज, ये नहीं कि एक्सरसाइज करने पे आए तो एक्सरसाइज ही करते चले आ रहे, जहां पे आपको तकलीफ ना हो उतना काम करना है। ठीक है ना? हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है ना? तो इस चीज का हमको ख्याल। अच्छा, एक चीज और बताएं, ये भी नहीं कि 2 दिन किया, खूब सारा किया और फिर 20 दिन पड़ गए। हम सब ने एक नॉवेल, अगर नहीं भी पढ़ी है, कोई ऐसी चीज नहीं, एटॉमिक हैबिट्स करके नॉवेल है,
सूक्ष्म हैबिट्स मतलब छोटी छोटी। कहा यह जाता है कि अगर आप कोई चीज छोटी चीज निरंतर करते रहे वो ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत कि एक दिन करके आपने एक दिन खूब सारी कर ली और फिर आपने छोड़ दी। तो हमें जाना, ठीक है जी। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। तो एनी इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन। सर ऐसा ही होता है, 2 दिन करने के बाद छूट ही जाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है सर कि 2-4 दिन खूब जोशो खरोश से करते हैं, उसके बाद फिर छूट जाता है। मैम हम अपने आसपास की जगह पर पैदल भी जा सकते हैं, ये चीज भी, ये डिसीजन हमारे लेना चाहिए हम लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में। जी सर। एक चीज हम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हम सस्टेन कर सकें। जैसे हमारे घर से थोड़ी दूर पे मार्केट है तो मैं कोशिश करता हूँ पैदल चला जाऊं, तो दोनों चीज हो जाएगी। जो हम आलू खाएंगे वो हम उठा के लिए आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कुत्तों का, है ना। तो प्रिवेंशन ऑलवेज। अब ये बताइए बिफोर वी एंड, इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जी सर। सर एक क्वेश्चन, एक चीज और बिफोर वी एंड, इसमें क्या कोई ऐसी चीज थी जो हम, ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं थी डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें हमको करनी है, ये कोई लेक्चर नहीं था, ये हमको और आपको मिलके करना है अपने साथ, है ना। ये हमारे और आपके भलाई के लिए है, ये कोई मार्क्स लाने के लिए नहीं है, सीवी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, है ना। और इफ यू हैव थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है सर। जी सर, बोलते हैं कि जो जितना ज्यादा चलता है वो अपने उतना ही स्वस्थ जीवन कमाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों को छोटी मोटी जगह कम से कम पैदल चल के अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन टुडे। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। धन्यवाद सर। Thank you, sir. थैंक यू। सर वाला तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा। डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है सर, रिमूव कर लीजिए।